हाँ जी, सो सुमन भाई यू वर डिस्क्राइबिंग कि उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का था फिश का, एंड यूज्ड टू ग्रैब गो देयर एंड ग्रैब फिशेस। प्लीज कंटिन्यू। हाँ मतलब not only me, my group of people actually we used to go there. राइट। So ऐसा एक ग्रुप बना था. ऐसे ग्रुप्स होते हैं, I'm sure in every colleges they I'm sure you guys have seen. तो भाई So हम लोग विद इन द ग्रुप ऑल ऑफ देम यूज्ड टू ईट फिश, राइट? नहीं नहीं ऐसे भी there are people I know. There was one of my roommate was one of the guy who's actually ओके। from Andhra. ओके। If I remember his name is like Dami Raju हम्म। Venkatanaga Pavan Kumar. Okay. ओके। ओके। So Pawan was someone who was hardcoredly a vegetarian. Even anda bhi nahi ओके। khata tha. And हाँ हाँ। but he used to go there and he used to make khatarnak faces. Oh my God, what are you guys doing? हाँ So there's a funny incident happened. So there's a friend of mine who was staying in Bangalore, and his हाँ name was Sayyed. Okay. So Sayyed, like उन लोगों का जो मुस्लिम्स का जो होता है ना, मतलब दैट टाइम जो रमजान वगैरह टाइम में राइट। he हाँ invited us to his house actually. तो हम लोग तो हॉस्टल में, I'm sure everybody knows all hostel people are like hunger stricken people, like they're always hungry. हम लोग हाँ तो यार हम लोग तो we are like we can't we our food habit is totally different, right? हम लोग हाँ रोटी हाँ खाता था and उसमें जो उधर जाने के बाद इडली सांबर रायता and those things, right? We used to crave for हाँ our own food, like, when we'll get there. तो हाँ। तो जब इनवाइट किया सब भुक करके तेरा सब गया ठीक है. And we ओके। was having those chicken dinda tandoori's and all this non-veg wala stuff ठीक है. And then this ओके। guy came in and then he's telling Pawan is telling us यार इसको तो देख कर अच्छा लग रहा है, ट्राई करके देखो So ओके। I'm talking about the second year. First year he was a hardcore हाँ, vegetarian. Second year में he first अच्छा। tried चिकन ठीक है. एंड आफ्टर हाँ दैट वो जो खतरनाक जो जो नॉन वेजिटेरियन हुआ था, आई डोंट नो अभी क्या सीन है. हाँ बट हाँ। we became a hardcodedly a non-vegetarian after that. हम्म। So but हाँ सो वाज basically इट, हाँ हाँ, सॉरी। so basically I have seen people and South में ना मतलब when you call about a Brahmin ठीक है. So I'm a हाँ। Brahmin ठीक है. So being a Brahmin in ओके। Bengal or in Kolkata, it's like you can have non-veg also. ठीक है. But in other region, it is not अच्छा। the same. ठीक है. So I mean, and ओके। that's the first time I went out, right? I don't know the how the people do reacts and everything. ठीक है. And ओके। when you ओके। tell people that I'm a Brahmin, and the South ओके। people also say that they are Brahmin, so they ओके। like pretty shocked. Well, they not even have onions. So and me having everything chicken, हाँ mutton, everything. हाँ। राइट। तो मतलब हाँ थोड़ा बहुत ये सब था. But yeah, that's a different exposure you will हाँ get in your life of flavor. हाँ। राइट। सो भाई व्हाट यू आर सेइंग, इफ आई मे कंक्लूड फ्रॉम दिस, कि व्हाट यू आर सेइंग इज कि Bengali Brahmins have the flexibility to like eat these things, right? This is what you are saying. Yes, yes, they have the entire flexibility. No, they don't have Oh. the flexibility. It's part of their culture. Yes, that's the right word I would say. It's not flexible or something. I think that's a हाँ culture they have built all these years. I have okay seen my grandfather, uska papa, and all this, right? Unka papa and everyone, right? They have done the same okay thing. So yeah, so okay ऐसे हम लोग का घर का culture flow up हुआ है. So but after I was staying in South, मतलब वो non-veg से veg होने में थोड़ा मतलब I got towards the veg हाँ side. And हाँ now also there was a time when I was in Kolkata or like in my hometown, हम्म मुझे यही लगता था यार वेज खाना लोग कैसे खाता है. ठीक है, उन लोगों का ऑप्शन ही नहीं है. To be very honest, we have paneer and those things, the हाँ dals and everything, right? हाँ But अभी मुझे लगता है that
When I have that, I got that flavor of the blend of that veg wala thing. Even nowadays, like I also love the veg things. Right. And ठीक है. Suman bhai, about the food And habits, okay, about the food habits, how rarely or how frequently you have fish over here in Gurgaon? That's a very good question. So in my home, fish is veg. For us, fish is veg. ठीक है. So I think every single day I have fish, almost. So there are Okay. some bars, Shukravar, Sanivar, and those things, right? Saturday, Friday, I don't हाँ. have the non-veg itself. So Okay. that day is the only day don't have fish. हाँ. But normally we do have fish every single day. हाँ. जब घर हाँ. में, when I don't have my parents and all this, तभी तो you have to depend entirely on your cook. But cooks here is doesn't, I mean, वो घर वाला जो feeling होता है ना, जैसे मम्मी बनाते हैं and all this, वो वाला नहीं होता है. So then I actually eventually moved towards the veg side. That's the reason I got that flavor of veg. हाँ. Okay. और सुमन भाई, ये जो बंगाली कुइजीन है इन टर्म्स ऑफ द फूड आइटम्स एंड डिशेस, इसमें फिश के अलावा और क्या है? बंगाली बंगाली कुइजीन में है क्या और? Uh, so सब्जी वगैरह जो होता है ना, what I felt after coming here, after staying in Gurgaon or in the Delhi NCR area, that the 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 amount of the different types are pretty less here. ठीक है. So हम लोग के ओके. वेस्ट बंगाल में देर लाइक डिफरेंट डिफरेंट सब्जीज मिलता है जो इधर नहीं मिलता है. ओके. So one is the sabji is there, and देखो fish is not only one type of fish we have. ठीक है. I don't know how many types are there. ठीक है. ओके. And even I don't know the names also. हाँ. So they have we have fish, we have the veg part also. We have ओके. the sweets, which is very famous. हम्म. ठीक है. हम्म. जैसे रसगुल्ला is one of the thing जिसको हम लोग इधर बोलते हैं रसगुल्ला. ओके. And रसोगुल्ला, लाइक Rosh, बंगाली में तो अलग Rosh, से बोलते हैं ना, रसो. हाँ. रसगुल्ला. Roshagulla. और that sweet actually divined or it came from West Kolkata, मतलब from the West Bengal only. हाँ. इधर क्या है, आई थिंक स्वीट्स जो होता है ये सभी घी और बटर इसमें कंबाइन होके क्रिएट होता है इन द नॉर्थ साइड. हाँ. But in our हाँ. side, I would say the northeast side or the eastern side, and especially in the West Bengal side, everything comes हम्म. from chana. Chana means that um, milk का जो होता है, right? So, हाँ. हाँ. so every of our sweets like the shondesh, then the rasgulla, everything हम्म. uh, हम्म. derived from here, from there. Now, a different taste blend has been created in the north side and even in the south side also. हाँ. हाँ. But the original वाला flavor है ना, you can only feel that thing once you go there. वो होता है राइट. actually. वो का जो जहाँ से वो startup हुआ था, I mean that has a different feeling and a flavor, I would say. हाँ. हाँ. And and I think Kolkata is one of the right now. I have seen the south. I'm seeing currently here also. It's one of the cheapest city you can stay in. मतलब खाना वगैरह ना बहुत cheap है. I mean, if you go to a ओके. costly restaurant or something, it is not cheap. That is true. But eventually, nowadays you also get 20 rupees का ये मिलता है, थाली मिलता है, where you get veg, sorry, हाँ. non-veg. So non-veg हम्म. 20 rupees में it's very difficult. ओके. एंड यार मोल. Yeah, yeah. Coming back to the data engineering. Okay, तो आप अरे अपने रुक जा, इस पे एक दो क्वेश्चंस है, मैं वो कवर कर लूं. मेरे पास ठीक है, ठीक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, उसके बाद विल सर्कल बैक. सो सुमन भाई, लेट्स से देयर आर 100% ऑफ बंगालीज, राइट? तो उनमें से हाउ मच परसेंटेज ऑन यूजुअल बेसिस विल बी वेजिटेरियन, जो फिश वगैरह या कुछ भी नॉन वेज नहीं खाते? तो रफली लाइक व्हाट परसेंटेज वुड बी वेजिटेरियन आउट ऑफ ऑल द बंगालीज? Uh, in my own family, there are a lot of vegetarians. ठीक है. ओके. Uh, वेजिटेरियन माने जिन्होंने कभी नहीं खाया, नॉट दैट कि अभी वेजिटेरियन बन गए, मतलब दे हैव नेवर ट्राइड इट. अच्छा ऐसा. ऐसा तो भाई बहुत डिफिकल्ट है. Out of 100% ratio, I would say maybe 10%. अच्छा.
but I might be statistically wrong, but मुझे लगता है because I never seen a Bengali who is hardcorely a Bengali who's having only हाँ veg his entire life. ओके ठीक है, ओके जितना Bengalis देखा is basically major crowd ही ऐसा होता है जो they always go for the non-veg side. राइट राइट एंड ऑल्सो सुन भाई लाइक एज आई रिलेटेड मतलब मैं आई हैव नेवर बीन टू चेन्नई बट अगर मैं कभी गलती से पहुंच गया तो मुझे पता है मुझे तो बहुत इशू होने वाले हैं खास करके खाने के बीइंग अ वेजिटेरियन बीइंग अ नॉर्थ इंडियन राइट सो आप व्हेन यू वर देयर फॉर 2 इयर्स और व्हाटएवर टाइम फ्रेम यू वर देयर तो खाने के इश्यूज आते थे ऑल्दो फिश वगैरह आपको मिल जाती होगी क्योंकि वो भी कोस्टल एरिया तो उसके अलावा यू यूज्ड टू फेस सम इश्यूज इन फूड फूड में तो यार हम लोग का नॉर्थ इंडियंस का ना थोड़ा अलग ही होता है खाने का, हाँ especially in Chennai. I don't know. I'm not in the recent time. I never visited Chennai because that's the first and ओके last time I've been there. I promise that I will never go. ओके एंड और वुड so, यू वांट टू आई गेस so, well, see, I have stayed in Hyderabad. I have stayed in Bangalore. हाँ These two places में ना वो खाने का इतना issues नहीं है because राइट Hyderabad and Bangalore is a hub actually. जहाँ actually it's a राइट वहां mixture पे हर of कल्चर के लोग हैं तो सब कुछ मिल जाता है correct. और ये द टाइम आई वाज इन चेन्नई इट्स बेसिकली वो थोड़ा सटल था, मतलब एक चैनलाइज्ड करके रखा था, यही खाना होगा, हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा. We will not हाँ do these things and that thing. We will not experiment new things because that's our culture. We will don't हाँ go, we will not break our culture. राइट So this type था. I'm talking about long time back. I don't know right now what is happening because I know people who is also a Bengali. He was my, I would say, my friend in my college. ओके ओके So that time he was staying in Chennai, and still now he's staying in Chennai. So I'm sure he's adjusting. Then hopefully things have gone drastically राइट changed or something. So yeah, राइट but I'm sure that like if you never been to South, because first इससे जो होता है मुझे लगा चेन्नई स्पेसिफिक एक है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है. They राइट will not talk in any other language normally I've seen, but if you if you normally but if in Hyderabad and Bangalore I have seen they will talk in Hindi, English. But चेन्नई में इंग्लिश में आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है. ओके As I say, that was like long time back. अभी पता नहीं है. अभी I think things have got changed. I'm sure it has got changed because technically or technologically South has improved like anything. हाँ So I'm राइट sure they have obviously change it. यार टेक्नोलॉजी तो छोड़ दो, अभी सिनेमास वगैरह भी कितना सब जगह में वो लोग ही हिट कर रहे हैं. राइट नहीं सही है वो तो है खास करके तमिलियन मूवीज तो वहां I पे have जो movies for the हाँ like long time से मैं देखता था because I used to know Tamil ओके that time because वो हम लोगों ना कॉलेज में क्लासेस होता था अच्छा तमिल का, अच्छा so that you can actually interact. And हम लोग का तो MBA था, so you have to do those interactions and everything. हम्म So yeah, I mean that is one way of saying things, I guess. okay interesting and Suman at present how many languages you can speak or you are comfortable with So currently, I would say that I know Bengali. I okay know a little bit of Telugu, okay and I know a little bit of Tamil also. अभी तमिल थोड़ा बहुत अभी out of touch, out of sight, out of touch हो गया. Even Telugu the same thing. okay Uh, हाँ during time of college, I learned German actually because अच्छा Germany was one okay of my preferred city. I always wanted to go there. तो मैं okay जर्मन जर्मन सीखा था, L1 तक सीखा था, बेसिक वन, okay द हिंदी. बट माय हिंदी इज वेरी खतरनाक, आई नो, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है. बट हाँ अभी तो मच बेटर हो गया, ठीक है. हाँ पहले जो मेजर प्रॉब्लम होता था द सिंगुलर एंड प्लूरल वाला जो पार्ट होता है ना, मैं लड़की और लड़का हाँ का भी डिफरेंशिएट एक साथ कर देता था. सो आई शुड हाँ हाँ सही तो है या so that's the thing. That's the only things I know. Nothing. हम्म
तो roughly around 5 to 6 languages होगी, हिंदी और इंग्लिश तो है ही, Yeah, that's right? what I'm saying. अभी Tamil Telugu पे touch में नहीं हूँ, so I forgot almost. But if anybody talks in Telugu, I might can understand. अच्छा, ओके, नाइस। तो जो वहां पे लोकल वेंडर्स हैं जैसे चेन्नई वगैरह में, जो प्रोफेशनल्स हैं दे ऑब्वियसली नो इंग्लिश, राइट, तो वो इजी हो जाता है। बट जो लोकल वेंडर्स हैं वहां पे, लोकल लोग, तो उनको तो आई गेस इंग्लिश वगैरह दे माइट नॉट बी कंफर्टेबल, तो वो तो तमिलियन, मतलब तमिल या ये सभी बोलते होंगे, तो वहां पे साइन लैंग्वेज चलता है लाइक? नहीं, to be very honest, I have seen South के जो vendors भी होते हैं ना, even the हाँ, rickshaws and people, they will talk in English also. अच्छा, अच्छा, ओके। They are like trained themselves in such a way that they can actually talk. हम्म, But to be very honest, they are more comfortable in their own native language. So that is हाँ, a their place. I mean, if you go to Kolkata also, right? Their main language is Bengali. Okay, you will not find people talking in Hindi and all this that majorly, but there is a crowd who will talk in English. They will talk in Hindi and all this. But major crowd जो 98% crowd होता है ना, उसमें पूरा ही Bengalis में बात करते हैं. Same goes with the if you go to Bangalore, the Kannadi, then you go to Hyderabad, the Telugu part, uh, the Bangalore side, I mean like in the Chennai, the Tamil side, ठीक है. But अभी क्या हो गया ना, वो थोड़ा बहुत mixed culture वाला scene हो गया, right? People coming from different places for job, studies and everything, राइट, ठीक है. And South has gone so high in हम्म, education sector and all this, right? So students also come for studies and everything. तो अभी राइट, वो culture type का हो गया. Like, but एंड ऑल्सो सुमन योर, but हाँ, what we say in बोल, Bengal, in Bangalore, ठीक है, तो हिंदी इज नॉट काइंड ऑफ टैबू, ठीक है, तो वहां पे लोगों को हिंदी आती है, मतलब मोर देन 50% आई गेस आती होगी, ठीक है। जैसे हैदराबाद बैंगलोर में तो बहुत अच्छा आता है. दे नो इट वेरी वेल एंड दे कैन स्पीक ऑल्सो वेरी वेल. See, I was in Chennai for back in around 2010 to 12, like that time. ठीक है. So it's a pretty long time. ठीक है. इतना advance भी नहीं हुआ था, develop भी नहीं हुआ था. But there I faced or I have seen that majorly they are not good in Hindi, in especially in Chennai, the Tamil Nadu area. But recently I went to Tamil Nadu for some places like Kunnur Kurg घूमने के लिए, but they were talking in hardcore in Hindi also. So that's ओके, what I'm saying. So it has gone changed and everything. I'm sure in Chennai things gone different also. But एक चीज चेंज नहीं हुआ, वो है समर और क्लाइमेट. वो चेंज नहीं हुआ. I'm sure it is still, it always be a वो होगा। same. वो है एकदम क्या बोलते हैं उसको. वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, वो परमानेंट वेरिएबल ही है. हाँ। वो उसको आप छोड़ जाओ, दो, वो मैं हमारे जाऊँ, इंडिया नवीन से जाए, नहीं सभी के लिए वो वही होगा। है। हाँ, हम्म, सही है। सुमन, योर वाइफ इज आल्सो बंगाली? So no, my wife is actually, I mean, by caste she's Bengali, but she's born and brought up in Punjab. ठीक है. So पंजाब? she, yeah. पंजाबी। अच्छा, नाइस। So actually उसमें ना उसका ना बंगाली का ट्रेंड्स कुछ भी नहीं मिलेगा, because she's born and brought up in लुधियाना. ठीक है. ओके, ओके, तो मतलब you will get the hardcore, I would say, वो नॉर्थ इंडियन वाला जो पंजाबी वाला जो होता है ना, राइट, राइट, वही राइट, वही वाला फीलिंग ही आएगा. But हाँ, since like उनके घर में they parents will talk in Bengali, so that's the reason she can talk in Bengali. And she spent major ओके, time outside India. ठीक है. तो she was in London for a pretty long time. उसका studies वगैरह सब उधर से ही हुआ था. तो I ओके, mean, I don't know, मतलब she's not a Bengali for sure. ओके। एंड हाउ डिड यू गाइस मेट, लाइक इट इज अरेंज मैरिज और लव मैरिज? Arranged marriage itself. सॉरी? अरेंज It's मैरिज। an arranged marriage. अच्छा, अच्छा, सो योर फैमिलीज फाइंड योरसेल्फ, लाइक एक दूसरे को फैमिलीज ने ढूंढा लाइक? हाँ, एक्चुअली वो फैमिली से बात हुआ था फर्स्ट. ठीक है. माई पापा का फ्रेंड का
छोटे भाई का ऐसा कुछ था, फैमिली ट्री था ऐसा कुछ था. And they were searching for a guy, and our Okay. parents were searching for a girl, and that's how that we were talking. We started talking. That time she was in Scotland, and I was in Dundee that time. So Okay. eventually हम लोग almost same side में ही थे, I would say. मतलब दोनों ही लंदन में थे. So I Okay. was like, I went for an on-site for some projects, ठीक है, Okay. and she was studying there that time. तो Okay. तो we used to talk there, and मेरे लिए तो बहुत सही था, मुझे एक इंडियन मिल गया, मुझे फ्री फूड मिल गया, you know. Right. Right. So if once you go to outside India, na, food is one हाँ. of the biggest challenge you will face, हाँ. हाँ. nevertheless wherever you go. But अभी US पे बहुत सही हो गया. I'm sure in UK also the same thing. But see, Dundee and all these things, it's basically very remote. मतलब वो थोड़ा interior side में है. And हाँ. मतलब उसमें ना, मतलब जैसे लंदन जो मेन स्ट्रीट्स जैसे होते हैं ना, सुंदर, मतलब दोज, मतलब मेट्रो हाँ. कल्चर एंड ऑल दिस, वो अभी तक उधर नहीं गया है. इट्स मोर ऑफ लाइक हेरिटेज दे Okay. बिल्ड. आई मीन, सो हम्म. फॉर मी वाज लाइक, यार मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो आई हाँ. यूज्ड टू फाइंड एंड बिल्ड मेक फूड. आई यूज्ड टू लाइक वर्च फॉर लाइक होम फूड. मिल गया तो बहुत सही है. सो आई मीन, Okay. when we met and all this, यार मैं तो फर्स्ट डे पे ही जाकर खा लिया था. मैं बोला था क्या खाना. So yeah, Okay. eventually that's the way we met, and and I think on the third or the fourth meet, we got married. So it has not been a very, वो होता है ना, अच्छा. girlfriend or a relation, ऐसा हाँ. कभी हाँ. नहीं. हाँ. So on the fourth हाँ. meeting, we got married. Okay. Okay. Interesting. बहुत ही अच्छे से पसंद आ गए होंगे. That is how you got married in the fourth meeting, right? हो सकता है बस एक, uh, like there's a saying which says, right? I mean, हाँ. talk to a person over phone or something as a girlfriend boyfriend relation versus staying with that Right. person with your entire life 24/7. There's a hell and heaven Right. difference. Yeah. So हाँ. yeah, I mean, obviously friendship is very important. I think that's हम्म. kept our relationship इतना दूर, दोनों अभी शादी के बाद दूर दूर रहना. I Right. think that's the main thing which kept us strong. That one day it will come that we'll again meet. Right. So Suman, in long term, like how do you plan to solve this issue, the geographical disparity issue? So you'll try to find out job because you both are in private industry, right? So you'll try to find out job in a common city. Like how do you find it going ahead? So my wife, the thing is my wife was the main reason I shifted from Bangalore to Gurgaon was of my actually for my wife, because her my in-laws like houses in nearby, and she Okay. wanted to stay in nearby only. And Right. उनका ना थोड़ा बहुत food लेकर बस one of the biggest challenge she faces till now. She always complains उनको Right. नॉर्थ इंडियन स्टाइल वाला खाना नहीं मिलता. I mean, हाँ. obviously यार, मतलब वो कभी नहीं मिलेगा. I mean, that will never be हाँ. there. Right. So, and I mean, I think that's the most important thing. That's the main reason I came here, because I thought like one of us हम्म. first come here, and then we'll हाँ. find we'll find a job. हाँ. So I somehow find out, but she haven't got anything because, as I said, हम्म. मतलब उनका profile as a niche food profile है ना. Finding Right. something is very difficult, especially in Delhi NCR. उसमें अभी research R&D है, cancer वाला part, I don't know Right. ये और हम्म. नहीं है. As far as what I've researched, there is nothing right now. Yeah. For Right. you, it अभी will वही hardly take time. 3 months. Sorry. I'm saying for you, it will hardly take 3 months to shift to Bangalore. मतलब हाँ, मतलब but I don't want to go to south anymore. हाँ. मुझे बहुत सही लगता है. ठीक हाँ. है. हाँ. Because I mean, वो होता है ना, मतलब एक बॉन्डिंग वाला जो सीन होता है ना, मतलब I हाँ. felt that I can connect better. The हाँ. reason is because I can talk in my हाँ. own language. ठीक है. Because I'm not that good in Tamil, Telugu और कन्नड़ यार, मतलब वो होता नहीं है मेरे से. ठीक है. हाँ.
uh, No disrespects or something. I am uh, to any culture or anything. That's my right, personal opinion. Okay. right, And although I have studied from there, I've been there so pretty long. uh, Whatever I am now is because of those uh, places. hmm, hmm, right. एक एक जनरल बेसिस पे क्वेश्चन सुमन, ऑन जनरल बेसिस एज फार एज द एंटायर बंगाली कम्युनिटी इज कंसर्न, what do you think, how much open or flexible they are, whether it's a boy or a girl, to marry outside, marry a non-Bengali? How much open they are on a usual basis? Is there any pressure from the family to marry a Bengali only? Like, generally, how is it the case? यार मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है। अभी ना इन दिस सेंचुरी I don't हाँ, think that people do believe in all these things, but there are some people obviously definitely will believe. Their families would be believing in those things that इसको ही शादी करना है, ऐसे ही करना है। हाँ, हाँ, uh, मेरे घर में ऐसे कुछ stringent वाला नहीं था that you have to marry this and all this, ठीक है। okay, But luckily my wife falls in the same caste what I am, ठीक है। That's the reason we okay, got okay, married। अच्छा, तो बट मेरे घर से कभी ऐसा नहीं था दैट okay, you have to marry this and all this, मतलब ऐसे ही होना चाहिए। यार hmm, मुझे तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे यही लगता है दैट यार कास्ट फास्ट लेकर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। right, एट द एंड right, ऑफ द डे यू आर स्टेइंग विद दैट पर्सन शुड बी परफेक्ट फॉर यू। आई मीन hmm, परफेक्ट तो कभी होता नहीं है, एटलीस्ट यू कैन एक्चुअली जेल अप और मैनेज योर थिंग्स right. एंड आई मीन एटलीस्ट यू गाइस कैन स्टे टुगेदर, दैट्स द ओनली जनरली थिंग। परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन मेरे वाली परफेक्ट है। अच्छा, वो सबको वेरी यही नाइस। लगता है मेरे वाली परफेक्ट है। तो मुझे मुझे लगता नहीं है मेरे वाले परफेक्ट टू परफेक्ट है, ऐसा तो मुझे लगता हाँ, नहीं। हाँ, बट आई वुड से दैट द मेन रीजन वी अगेन वी स्टेड स्ट्रांग एंड सिंस वी आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज आल्सो, तो हम्म, इज बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप वी हैव, ठीक है, और द ट्रस्ट वी हैव, ठीक है। वी आर लाइक वेरी ओके, गुड फ्रेंड्स, ठीक है, टिल नाउ वी आर वेरी हाँ, गुड फ्रेंड्स। पता ओके, नहीं कितना हस्बैंड वाइफ वाला फीलिंग है, बिकॉज आई व्हेनेवर आई टॉक टू हर इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड, ठीक है, एंड हाँ, हाँ, दैट्स द वे हाँ, आई शेयर थिंग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो हम्म, वो वाला फीलिंग है, बिकॉज मेरा ना अभी वो होता है ना, वो आफ्टर मैरिज वाला जो फैमिली वाला जो सीन होता है ना, मेरा अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, बिकॉज आफ्टर गॉट आई मैरिड, आफ्टर गॉट मैरिड आई लाइक शी स्टेइंग हियर, आई एम स्टेइंग देयर। तो राइट, वो वाला अभी कनेक्ट नहीं हो पाया, बट हाँ मतलब, बट देयर हम्म, वाज अ हेवन डिफरेंस यार, मतलब मैं एज अ गर्लफ्रेंड जब उसको वी यूज्ड टू टॉक, एंड देन आफ्टर हम्म, गॉट मैरिड देयर वाज लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। ओके, ओके, I mean, I have हम्म, learned a lot of things. The first thing I have learned is that to be patient. It has ओहो, increased drastically. ओके, हम्म, शादी के बाद पेशेंस आ जाती है लोगों में, ये तो चलो सही है। शादी के पहले नहीं होती। हाँ वही है, मतलब मेरा पेशेंस तो बहुत इंक्रीज हो गया। मतलब ऐसे हो गया अभी, कोई किसी ने बोल भी सकता है, बोलता है तो आई somehow digest things. I not even react. हाँ। And there's a सही time comes when she gets confused. यार, why this guy is not even reacting? मुझे यहाँ के बोलते, are you okay? मतलब yeah, fine. हाँ, How can you be so fine? हाँ, हाँ, ऐसे हम्म, होता है। सही है, नाइस। सो हाँ अनमोल, नाउ बैक टू योर क्वेश्चंस। अच्छा, मेरा एक एक रह गया। सुमन भाई, एक ना मूवी आई थी विकी डोनर, हैव यू सीन इट? हाँ यार, सीरियस। तो उसमें, अच्छा वो, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि वो कितना अनरियलिस्टिक और कितना रियलिस्टिक है। जो कल्चरल डिफरेंसेस दिखाए हैं उसमें, लड़का पंजाबी होता है, लड़की बंगाली होती है। तो जो कल्चरल उन पे आइडेंटिटीज पे थोड़े बहुत वो जो झंझट होते हैं, तो हाउ मच ऑफ इट इज रियलिस्टिक या एग्जैजरेट करके दिखाया काफी? यार मुझे लगता नहीं है दैट आई मीन again I will come to, because I haven't seen the entire Bengali culture कैसे होता है entirely, those things people are different in different places. मुझे ओके, लगता नहीं है that everybody
I mean Bengalis are pretty cool types, मतलब ये सब लेकर, ठीक है. हाँ हाँ And, I mean, if I really recollect the movie, it's basically the girl was Bengali and the guy was some हाँ Punjabi. So राइट. ये तो अच्छा ही था, पंजाबी का बंदा मिल गया. No, so what I'm referring to is कि वो लड़की को उसका relatives आके लड़की की मौसी बुआ सब बोलते हैं कि couldn't you find a better Bengali boy, कि ये पंजाबी हू लाला ये बात तो बिजनेस को होते भी रहता इतनी है, मनी ये देगी. ये बात तो होते रहता है, ठीक है, ऐसा है, बिकॉज लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, स्पेशली रिलेटिव्स. हाँ. मतलब वट एवर दे हैव शोड इज नॉट 100% रॉन्ग, आई वुड से हम्म 70% right. But again, हम्म it depends on the upbringings and the culture you come on. I think हम्म जो थोड़ा अभी बाहर का कल्चर देख लिया, ठीक है, बाहर हाँ रखा है, stayed there, they will not talk about this, I'm sure. Yeah, they will only think that how much their children is happy with that guy or that girl and how हाँ. much compatible they are. हम्म So हम राइट. लोग जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे ना पहले, जो भी यानी .exe फाइल्स जितना इंस्टॉल करते थे, उसमें ना compatibility का ऑप्शन होता था, हाँ इफ यू विंडोज विस्ता एक्सपी राइट. 7 10, वो हाँ वाला compatibility वो चेक करना चाहिए, मुझे जो लगता है, जिसमें फिट हो जाएगा, हाँ हाँ कोई जिसमें बग फिट हो क्रिएट नहीं जाए. करता. हम्म नहीं सही है. दैट मेक सेंस. अच्छा हाँ अनमोल, नाउ बैक टू योर क्वेश्चंस. हाँ. And Soman bhai, tell us the difference between all the profiles you have worked in. Okay, business analyst, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर. अच्छा, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है, और अगर किसी को ये पाथ फॉलो करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? Yeah, I would thing is first and foremost, I don't recommend people to follow my path because that's an experimental path. ठीक है. राइट राइट. And also my path was something, since I don't come from a hardcore BTech wala हम्म background, right? So हम्म for me it was like something which always uh, for me it was a little bit difficult, I would say, from switching. हम्म Like I can't directly go to a ML role or something like that. So हम्म let's talk about the differences. Okay. So हम्म being a business analyst, for me, I felt that a business analyst role was something which was a middleware between technology and the business. So I was the हम्म bridge between these two, right? So इनको जो चाहिए था हम्म टेक्नोलॉजी में से इसको बनाना था. So I had to tell them मुझे ऐसा एक हाँ API बना के दो. So for example, so this will actually fetch the data from here and then it will go there and it should pop up in the हाँ Django data frame or something like that. ठीक है. So ऐसा था, and that time there was no Django, sorry. मतलब I'm telling in a ओके. holistic view that was happening. मतलब you will be a bridge. Now coming to हम्म like a management consultant is nothing but I would say a strategic team जो हम्म strategy में काम करता है. For ओके. example, so like if you see a life cycle of data, so data में क्या जो कोई कंपनीज का डेटा आता है, so डेटा आता है, डेटा के लेकर जो द फर्स्ट जो डेटा लेकर जो इंटीग्रेशन डेवलपमेंट होता है. सो दैट राइट. बेसिकली दैट इंटीग्रेशन डेवलपमेंट और आई यू से द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला साइट्स जो इनिशियल जो टीम करते हैं, जिसको हम लोग अभी हम्म पहले डीवीएफएस बोलते थे, अभी उसको चेंज करके अभी डेटा इंजीनियर कर दिया. ठीक है. ओके. Second, it moves to the once the data engineers get their final data and everything gets rolled out, the from the हम्म data warehouse or data lake. So so it goes to the end users. So the end users is राइट. basically nothing but the I would say an analytics team who basically हम्म works on the reporting side, or the ML team, the data science team who basically works on the machine learning side. That part which comes up. राइट. So हम्म and then once the ML team or the analytics team have created their reports and everything, there's a Power BI fancy dashboard which is coming up, So then the team who works is basically the strategy team. So basically kuch nahi hota hai. Strategy team is basically the team who normally looks into the data.
they take the decisions, kaise kya hoga, how it will be working and all this, right? So Right. I was part of that team, but I was a little bit inclined towards the technology side. So मुझे थोड़ा बहुत SQL queries करने में बहुत मजा आता था. So Right. I used to create PPTs and all this, reports and everything for the leaderships and all this. But I was also in the inclined towards the Tableau as well as the a little bit of the querying side also. Then part of the data scientist role. So data scientist role may that's a term they have given to our role as a manager. Okay. So basically data scientist के under two team. So basically I used to have the BI developers, basically the Power BI developers, and I have the Python developers also. So basically my team was is to work on the development or the automation of the Python side as well as the end product of the integration of the data and everything to the BI side. So मुझे लगता है data scientist is basically a mixture of blend of data engineering and the data science, which is clubbed together to become a data scientist. I mean, for मतलब you should know basic data engineering concepts or the things like I'm sure like SQLs. Then I mean Python is also used for querying also nowadays. So and then also a little bit of the obviously you need to know the ML side also, because when I was a part of that team I was working on the internal audit also. So basically internal audit nothing but they take care of the audit side. So we used to take on anti-money laundering things and all this. So there we used to get and all this. So you need to know it will be a mixture, it's a blend of everything. So that is one role. And then coming to the other role is ML lead or something. So basically this role is basically I was handling the machine learning team actually. So I was their stakeholder team, and TCS team was so I'm like an offshore manager to them. So whatever we have, so I used to tell them that do this and do that. They used to create the algorithms for us. They used to give our, the skewed data or like the final data to us, and then we used to work in that for our reporting side. And currently, the role which we have is basically is a mixture of, I would say, engineering and the analytics side. Okay. Anmol, how much time we have in this session? 1.5 minutes. Huh? 1.5 minutes. Okay. So let's wrap this one up. We'll be doing the last session, Suman, after this, and we'll conclude in that one, and we'll continue from where we are living in this part, right? We have some questions, we'll cover that and we'll conclude, right? Okay. Okay.